आवाज़ आ रही है आपको? Yes, sir. चलिए अपने बारे में कुछ बताइएगा। Yes, sir. My name is Yosan Prakash. I am from Prayagraj, and I was born and brought up in Prayagraj only. I did my schooling from Prayagraj. Thereafter, I went to Dr. Ram Manohar Lohia National University for my BLLB graduation, and I am from 2020 batch. आप मुझे बताइए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कौन थे? सर, वो एक बहुत बड़े सोशलिस्ट लीडर थे। Well, he is considered as one of the greatest leader of Indian history, who ओके, always believe in the principle of socialism. व्हाट इज़ सोशलिज्म? So, socialism is a principle which states that the state will ensure proper distribution of income and resources in every strata of the society. व्हाट इज़ कैपिटलिज्म? So capitalism is different from socialism. Capitalism more focuses on profit, and in capitalism, the government has no business to conduct a business. एनसीआर और एफआईआर इन दोनों में क्या फ़र्क है? So the FIR has been construed under 154, whereas NCR has been construed under Section 155. And the major difference is that in whenever there is an lodging of FIR, and officers gets the police officer gets power inherently to conduct the investigation, as well as to arrest the person without the order of the magistrate. Whereas in NCR report, the magistrate's order is necessary to conduct investigation as well as to arrest any person. ओके, आपको मैं एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे प्लीज़, ठीक है? मान लीजिएगा एक दिन रात को आप अपने घर पर सो रहे हैं, वो भी जब आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन चुके हैं, ठीक है? अचानक से रात में खाना खाने के बाद आप सो गए हैं और आपके पेट में स्टोन पेन होना स्टार्ट हो जाते हैं। स्टोन पेन काफ़ी तेज़ होता है और आप उस दिन अपने आवास पर अकेले हैं। आप दवाई लेने के लिए, पेन किलर लेने के लिए घर से बाहर निकलते हैं और आपको पता लगता है कि जो मेडिकल शॉप है वो काफ़ी दूरी पर है, तो इसलिए आप अपनी गाड़ी बाहर निकालते हैं और खुद ही ड्राइव करके चलने लगते हैं। जैसे ही आवाज़ से कुछ दूरी पर आप पहुँचते हैं तो आपका बॉडी का जो नियंत्रण है वो पेन की वजह से कंट्रोल से बाहर हो जाता है और जिससे सड़क के किनारे एक कुत्ता यानी डॉग सो रहा था, उसकी मृत्यु हो जाती है बिकॉज़ ऑफ आपने गाड़ी आपसे अनियंत्रित हो गई और आपकी गाड़ी भी पूरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। आप मुझे बताइए आपने कौन-सा ऑफ़ेंस किया? Sir, may I get 2 seconds to think about it? ओके, Sir, in this situation, there will be no offense as such because I was I what I was driving when I had the control. Unfortunately, I lost the control, which was unavoidable or inevitable in my senses, which I cannot foresee. Therefore, I will take the plea of accident, and there will be no offense. ओके। अब एक प्रॉब्लम आपके सामने और मैं दे रहा हूँ, वो ये है, आप कोर्ट परिसर में हैं और वहाँ पर देखते हैं कि कुछ दूरी पर एक टंकी से पानी का लगातार रिसाव हो रहा है। रिसाव जब हो रहा है तो प्रथम दृष्टया वो आप ही देखते हैं और नोटिस करके उसे इग्नोर करते हैं। मान लीजिए वो आप ही की कोर्ट थी और वहाँ से किसी टंकी पास से गुज़र के जा रही है पानी का और वहाँ से लीकेज हो रहा है। आप पूरी तरीके से उसे इग्नोर कर देते हैं और पानी बर्बाद होता है। अब बताइए लायबिलिटी किसकी बनेगी? Sir, there is no legal foundation uh, to take the cognizance of the leakage of the tank. Whereas being in a human society, there is a moral duty to safeguard each and every natural resources. So that's why there will be no legal liability as such, but morally it will be wrong.
भारत भाग्य विधाता, इससे क्या समझते हैं आप? सर, भारत भाग्य विधाता मीन्स जो लोग हैं, जो मतलब इंडियन सिटीजन्स हैं, वो भारत का फ्यूचर एक बेटर वे में डिजाइन करें। ओके। यदि अभी आपको कोई चीज़ खाने के लिए दे दी जाए, तो आप क्या प्रेफ़र करेंगे? Sir, since it's evening time, then I will like to have bread and toast or with a cup of coffee. ओके, प्लीज़ मम्मी जैन सर प्लीज़ कंटिन्यू। लेट सपोज आप एक 5 स्टार होटल में डिनर के लिए जाते हैं और वहाँ आपको ये बात पता थी कि आपके वॉलेट में पैसा नहीं है, यानी कि आप पे नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आप एक 5 स्टार होटल में जाके ऑर्डर करते हैं खाने का और पेट भर खाना खाते हैं, लेकिन चूंकि आपके पास पैसे नहीं थे तो आप बिल पे नहीं कर पा रहे हैं। ये बताइए आपने कौन सा ऑफेंस कमिट किया? Sir, here section 23 of Indian Penal Code will be attracted as I will be charged for wrongful gain, and the other person being will be a victim of wrongful loss, because in this particular situation I am gaining which I am not legally entitled, as I am not paying for the same, and the person who is on the other side is losing something which is legally entitled to. बेसिकली आपने 23 की बात की है, ये कोई ऑफेंस बेसिकली इसके लिए कौन सा पर्टिकुलर सेक्शन आप मुझे बताने जा रहे हैं? कौन से सेक्शन में पनिशेबल ऑफेंस है? So 415 section and 417. 415. Yes, sir. Okay. Can you define consent under section 13 of Indian Contract Act? Yes, sir. So the term consent is based on the legal maxim consensus ad idem, which means meeting of minds. Both the parties who are entering into an agreement should have the same mind, and that means they should have the same thinking, which means in general that whenever any party is suggesting anything, the other party should have the same or the same similar meaning which the other party is trying Okay. to convey. Okay. And when a consent is said to be free? Yes, sir. So section 14 illustrates the following conditions when the consent will not be considered to be free. A consent will be free when it is not attracted or affected by fraud, misrepresentation, coercion, undue influence, and mistake. And what is judgment in RAM? So a judgment in rem is a judgment which is passed against the whole world, which have effective value against the whole world. Okay. Is there any difference between theft and mischief? Yes, sir. Sir, in theft, there is a dishonest intention and taking away the movable property from the possession of the other. Whereas in mischief, there is a dishonest intention in order to cause loss to the property of the other. Okay. I would like to request Ravi sir, kindly proceed the interview. Good evening, Vivasan. Good evening, sir. Vivasan, which is your favorite subject? Sir, Indian Evidence Act. Indian Evidence Act. So, will you please try to explain the preamble of the Indian Evidence Act? Yes, sir. Sir, it states that this is an act which defines and consolidate all the laws relating to an evidence in throughout the territory of India. Which section talks about the presumption of death under the Indian Evidence Act? Presumption of death. Sir, Absolutely. presumption of death has been given under section 108. And what it says? Sir, it states that whenever any person who is not being heard for 7 years, then the court will make a legal presumption that the person has died. And which section talks about the concept of dying declaration? Please explain this concept with the help of leading case laws, at least one. All right, sir. Sir, the concept of dying declaration is based on the rule of necessity, which means rule of necessity. It is construed under section 32 clause 1 of Indian Evidence Act,
and it basically states that whenever any person who is dead, his previous statement which has been given earlier will be considered as relevant in the further proceedings. In this particular rule, there is a leading case with namely Pakla Narayan Swamy versus King Emperor, which is Okay, it's okay. It's okay. What is the basic motto of the review? Sir, the basic motto of the review is to check the correctness, legality, and propriety of the judgment passed by the learned court below. Okay. Kindly explain at least four essentials or the four features of the customs. Yes, sir. So the customs is considered as the sources of law. In order to form a custom, there should be uniformity. Number one. Number two, it should be accepted by public at large. Number three, there should be no ambiguity. Number four, there should be uh, up- it should not be opposed to public policy. Okay. My last question is to you. Okay, which case it has been cited that the preamble is the part of the Indian Constitution and in which year also? Yes, sir. Sir, in Keshananda Bharati versus State of Kerala, it was in 1973. It was categorically held by the Honorable Apex Court that the preamble forms a part of basic structure. Okay, thank you so much, Vivasan. Now I would like to request Honorable Akhilesh Tripathi, sir. He will continue with you. Thank you, sir. Good evening, Vivasan. Good evening, sir. Vivasan, what is ex post facto laws? Yes, sir. So the ex post facto laws has been defined under Article 20, Clause 1, which states that the state cannot bring new laws uh, increasing the penalty of the accused. Whereas if the state is bringing any legislature which is beneficial in the interest of the accused, that can be implemented retrospectively, whereas all the laws which are being brought up by the legislature has to be in strictly criminal sense, it has to be in prospective manner, implemented in prospective manner. Okay. Can you give us any example regards this law? Yes, sir. Sir, if we see the incident of Delhi gang rape case, where there was a juvenile who was prosecuted and sentenced only for 3 years, whereas people were demanding for his greater Okay. sentence. Okay. It's okay. Who can file a PIL? Sir, PIL is a inherent right which has been given to the citizens of India by the leading case laws, and it was developed by Justice P.N. Bhagwati, which states that who designed it to enforce the fundamental rights, and it can be filed any person or any organization in the country. Okay. What do you understand by the judicial activism? Yes, sir. So judicial activism is something which is considered to be a step when the courts take some actions or do some business which is not specifically provided in the law. For example, the concept of basic structure is being considered as the judicial activism. And what is the difference between a curative petition and a review petition? So curative petition is also considered as judicial activism, and it has been developed by virtue of Article 142 in the case of Ashok Group Hurra. Whereas in review petition, this right has been expressly provided in the statute itself, and it states that the correctness, legality, and propriety of the learned court below has to be checked in by the court which passed the judgment. Whereas in curative petition, in certain cases only curative petitions can be filed, like Okay. Thank you, Vivasan. Now I would like to request Sateen sir. Sir, please continue the interview. Thank you. Thank you very much. विवासन आपका मॉक यहीं पे कंप्लीट होता है. विवासन कैसा लग रहा है आपको? सर अच्छा लग रहा है, बट आई थिंक मनोहर लोहिया के बारे में थोड़ा और पढ़ के रखना चाहिए था हमें अच्छे से.
वैसे हम सारे पैनलिस्ट आपकी जो भी हमारा कन्वर्सेशन हुआ है उससे काफ़ी हद तक खुश भी हैं, और कन्वर्सेशन से आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, मतलब बताने का तरीका, उससे हम लोग काफ़ी सेटिस्फाई हैं। 1-2 जगह आई कॉन्टैक्ट आपका थोड़ा-सा अलग हुआ है, हालाँकि हम लोग वर्चुअली जुड़े हैं तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। जब भी आप आंसर Yes, sir. करेंगे तो सारे पैनलिस्ट को देखकर ही आंसर करिएगा, ठीक है? Yes, sir. एंड जो मैंने प्रॉब्लम पूछी थी उसके भी आपने लगभग सही आंसर करे, ऐसी उसमें कोई दिक्कत है नहीं, बिकॉज़ ड्यू टू पेन आप अपने माइंड को अनकॉन्शियस हो गए थे, तो उसके लिए कोई लायबिलिटी आपकी नहीं बनती है। पानी अगर टंकी से निकल रहा है, तो आप यहाँ पर बोल सकते थे कि मैं प्रथम दृष्टा जो भी मेरा सबऑर्डिनेट स्टाफ होगा, तो उससे बोलता, यदि मैं इग्नोर कर रहा हूँ, तो मोरलिटी के तौर पर आप लायबल बन रहे हो, ठीक है? अकॉर्डिंग टू रूल बुक ऑफ कोर्ट, मोरलिटी के Yes, तौर sir. पर ऐसा कोई जुरिडिक्शन या ऐसी कोई बात है नहीं। नैतिकता के तौर पर आपको ये लाइन बोलनी थी कि नैतिकता के तौर पर तो मैं यहाँ पर ज़िम्मेदार हूँ, हालाँकि ऐसा कोई नियम या Sir, I said that. हाँ, I वो मैं said कह रहा हूँ, that. मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं एग्री हूँ आपसे। बट एक Yes, एक sir. वर्ड और बोल देते कि मोरलिटी, नैतिकता, तो और अच्छा लगता। बाकी ठीक है आपका, और ब्रशअप कर लीजिएगा। कब है आपका इंटरव्यू? Yes, sir. Sir, 24th को है. बस तो अभी हैं 3-4 दिन आपके पास, तब तक अच्छे से कर लीजिएगा, कॉन्फिडेंट है। फेस पर थोड़ा-सा स्माइल रखेंगे तो और अच्छा रहेगा। हमारी तरफ से, टारगेट फॉर आईक्यू की टीम की तरफ से आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, ऐसी हम लोग चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। Thank you, डेफिनेटली sir. आपका सिलेक्शन होगा और एक अच्छी रैंक आएगी आपकी। ऐसी Thank you, sir. उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं। हमारी तरफ से शुभकामनाएँ हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you, sir.